हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विथ प्रीति। मो प्रीति आपण चैनल लर्निंग विथ प्रीति को स्वागत जनाऊँगी। आज मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 जोटा कि आमर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2015 या पूर्व जो एग्जाम होता तार क्वेश्चन पेपर मुझे आसी आपण मैंने को मु आंसर कहबिनी खाली क्वेश्चन प्रोवाइड करी जो मानकर सॉल्यूशन आपण निजे ट्राई करंतु कने कहीदेले आपण मैंने करेनि निजे तो निजे करिकी मु आपन को टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देबी सेठी आपण आंसर की प्रोवाइड करिवे हम टीम ताको चेक करिवो कि आपण केते ठीक करचंती केते भूल करचंती तापर परे मु आपण मानु को आंसर की प्रोवाइड करिवि। चलंतु देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिवा। एटा होची असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे पेपर 1 पेपर 2 मु काले आपण मानु को प्रोवाइड करिवि। आपण माने पेपर 1 रो क्वेश्चन प्रथमे हमें देखि नबा। क्वेश्चन 1, which of the following statement is correct? Option number A, the current in a short circuit is always 0. Option number B, the current in an open circuit is always 0. Option number C, the resistance in an open circuit is always 0. D होची none of the these। जोटा भी आपन को ठीक लागुची आपन माने करंतु। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु देबी सेठी आपन माने आंसर के देबे चेक करिबा केते कोन ठीक रहूची नाही। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is correct? Option number A, the voltage in a short circuit is always 0. The voltage in an open circuit is always 0. Option number C होची resistance in a short circuit is always infinity. Option number D, none of the these। Question number 3, several light bulbs are connected in parallel and one light bulb burns out and other light bulbs। Option number A, all bulbs stop working. B होची all bulbs light more, all bulbs burn out। Option number D देची none of the above। Then question number 4, several light bulbs are connected in series and one light bulb burns out. The other light bulbs, option number A, all bulbs stop working, all bulbs light more, all bulbs burn out, none of the these। Question number 5, fuses are used to protect the short circuit equipment, keep wires from getting overhead। Option number C देछि हमर break the circuit when too much current is being used। Option number D देछि all of the above। Question number 6, an electric kettle is rated at 1000 watt for use in a 220 volt circuit. A 12 ampere circuit fuse breaker is installed in a circuit. How many kettles are safety operated in the circuit? Option number A देछि more than 4, B देछि 3, C देछि 2, D देछि 1। Question number 7, electrical devices in our homes are connected in parallel na series na both series and parallel na none of the above। Question number 8, if you plug an electric toaster rated at 110 volt into a 220 volt outlet, current in the toaster will be। Option number A देछि the same as if we plugged into 110 volt, B देछि twice what if it should be। Option number C देछि half what it should be, D देछि none of the above। Question number 9, when a current I flows through a resistance for time t, the electrical energy spent is given by A option देछि हमरा IR into T, B देछि I square R into T, C देछि IR square into T, D देछि I square R by T। Question number 10, kilowatt hour is unit of potential difference, electric power, electrical energy, electric charge। Question number 11, the power dissipated in a resistor is directly proportional to the current through this resistor, the resistor value, the resistor across the resistance। Option number D देछि all of the above। Question number 12, transformer action requires। Option number A देछि alternating electric flux, alternating magnetic flux, C देछि constant magnitude flux,
डी देइछि हमर एनी ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 देइछि ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर प्रोवाइड्स ऑप्शन नंबर ए देइछि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, बी देइछि फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सी देइछि हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, डी देइछि फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। Question number 14. In a three-phase induction motor, the maximum torque is option number A देइछि independent of rotor resistance, B देइछि proportional to rotor resistance, C देइछि proportional to square of rotor resistance, D देइछि proportional to square root of rotor resistance. Question number 15. Rated speed of a three-phase induction motor is 1440 rpm for 50 Hz supply. The number of pole is option A अछि हमर 6 pole, B अछि 2 pole, C अछि 8 pole, D अछि 4 pole. Question number 16. If the rotor of induction motor rotates at synchronous speed, the torque produced is option number A अछि high, B अछि low, C होछि 0, D होछि हमर infinity. Question number 17. In 50 Hz induction machine, if the no load speed is 745 rpm, the synchronous speed is option number A देइछि हमर 700 rpm, B होछि 750 rpm, C होछि हमर 800 rpm, D होछि 850 rpm. Question number 18. In 50 Hz induction machine, if the no load speed is 2900 rpm, the sleep frequency is option number A देइछि 0.33 Hz, B देइछि हमर 0.67 Hz, तापर C देइछि हमर 1.33 Hz, D देइछि 1.67 Hz. Question number 19. If P equal to number of poles and N equal to revolution made per second, what is the frequency of an alternator? Option number A होछि हमर Pn by 2 Hz, B होछि 120 by Pn Hz, C होछि 120 N by P Hz, D होछि 120 P by N Hz. Question number 20. A series motor is efficiently suitable for option number A देइछि हमर high starting torque operation, B देइछि low starting torque operation, C देइछि constant speed operation, D देइछि none of the above. Question number 21. आपण मानकु गोटे फिगर दिया जाइछि एठी, फिगर भल से आपण स्क्रीन रे देखि पारुथबे। तापरे क्वेश्चन देइछि if Vx equal to 1 volt, Vr equal to देखै दउछि आपण मानकु Vx टा हमर जोटा देइछि 1 volt, तापरे Vr हमर देइछि 9 volt. Then the power absorbed by element R is तापरे देइछि हमर ऑप्शन नंबर ए देइछि 5 watt, B देइछि 9 watt, C देइछि 40 watt, D देइछि 45 watt. Question number 22. A certain practical DC voltage source can provide a current at 2.5 ampere when it is short circuited and can provide a power of 80 watt to a 20 ohm load. The open circuit voltage of the source is A देइछि 22.2 volt, B देइछि 80 volt, C देइछि 8.88 volt, D देइछि 200 volt. Question number 23. The current through a capacitor is given by IT equal to 7 sin pi t milliampere. If the energy stored at t equal to 200 millisecond is 3 microjoule, what is the value of the capacitance? A देइछि 2.99 millifarad, B देइछि 3.02 microfarad, C देइछि 18.14 nanofarad, D देइछि हमर 7.00 millifarad. Question number 24. एटी हमको गोटे दिया जाइछि सर्किट, आपण मन देखि परछे फिगर टा. द वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vx इन द फॉलोइंग सर्किट. एटी हमको Vx रो वैल्यू हमको एटी काढिबा को अछि. बुझियला. एबे देखिबा हमें ऑप्शन कोन दैछि. ए दैछि हमर
9.89 cos 400t plus 78.76 degree volt. ऑप्शन नंबर बी देइछि 7.80 cos 400t plus 48.9 डिग्री वोल्ट. सी देइछि 5.00 cos 400t minus 50 डिग्री वोल्ट. डी देइछि 1.95 cos 400t minus 41.21 डिग्री वोल्ट. तापर आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 25. द पावर डेलिवर्ड इन volt ampere to a load that draws 500 watt at a leading power factor of 0.75 each. A देइछि 500 minus 41.41 degree. B देइछि एंगल देइछि एटा. B देइछि 500 एंगल प्लस 41.41 डिग्री देइछि. C देइछि हमर 666.7 angle of minus 41.41 degree. D देइछि 666.7 plus 41.41 degree. बुझा पड़िला क्वेश्चन स्क्रीन रे पूरा विजिबल होउछि. आई थिंक विजिबल होउछि. ट्राई करंतु न हेले परे हमें करिदबा. किंतु एबे आपण माने निजे ट्राई करी आंसर की म आपनको डेस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम रो लिंक देबी. सेठी जॉइन होई जिवे करि सारे की समस्त सेंड करिवे. टीम ताकू व्यू करिवो केते कार करेक्ट आंसर म आपण माननको कहि देबी. आपण माने निजे करबा को चेष्टा करंत परे मु आपण मानक संगे आंसर डिस्कशन करि देबी. क्वेश्चन नंबर 26. For a particular circuit, it is known that V12 equal to 100 0 degree, V45 equal to 60 angle 75 degree, V42 equal to 80 angle 120 degree, and V35 equal to minus J 120 in all volt. Then all volts माने सबु गुडा कर यूनिट वोल्ट रे ही अछि. Then V25 in volts will equal to option number A is 189.8 34.95 degree. B देछि हमर 56.67 एंगल ले minus 11.52 डिग्री वोल्ट. C होछि 80 एंगल ले 130 डिग्री. D होछि 43.48 एंगल ले minus 40 डिग्री. Question number 27. A parallel RLC circuit is measured to have a quality factor Q0 of 200 at resonant frequency. The value of L if R equal to 1 kilo ohm and C equal to 1 microfarad is. A होची 25 pH. B देछि हमर देछि 25 माइक्रो हेनरी. C देछि हमर 40 मिली हेनरी. देन D देछि हमर 40 नानो हेनरी. Question number 28. A signal xt equal to 10 e to the power minus 2t ut is applied to a linear system for which the impulse response is ht equal to 10 e to the power minus 2t ut. The output yt is. A होची yt रो वैल्यू से कहूची कि 100 e to the power minus 2t ut ना. B देछि yt equal to 100 te to the power minus 2t ut. C होची yt equal to 10 e to the power minus 2t ut. D होची yt equal to 10 t e to the power minus 2t ut. Then question number 29. If ft equal to 5 e to the power minus 2t ut and gt equal to 4 e to the power minus 3t ut, then f of t into star जोटा star g of t will equal to. A होची e to the power minus 2t minus e to the power minus 3t. B हैला 20 e to the power minus 2t minus e to the power minus 3t. C equal to C option number C होची 20 e to the power minus 3t minus e to the power minus 2t. D होची e to the power minus 3t minus e to the power minus 2t. क्वेश्चन नंबर 30. गोटे सर्किट देछि देखि पारुथिबे. मु जूम करिके आपण मानकु भी देखौछि. सर्किट देखौ पारुथिबे. एटा द करंट थ्रो इंडक्टर इज. एटी पचाचे क्वेश्चन करंट इंडक्टर थ्रो रे केते पास करूछि. ऑप्शन नंबर ए देछि हमरो
2/1 plus j ampere, b होची -1/1 plus j ampere, c होची 1/1 plus j ampere, d होची 0 ampere. Then question number 31. For the circuit shown in figure, the voltage current expression are Vt equal to E1 sin omega t plus E3 sin 3 omega t and It equal to I1 sin omega t minus theta 1 plus I3 sin 3 omega 3 minus theta 3 plus I5 sin 5 omega t. The average power measured by the wattmeter is option A ଦେଇଛି half E1 I1 cos theta 1, B ଦେଇଛି half E1 I1 cos theta 1 plus E1 I3 cos theta 3 plus E1 I5. C ऑप्शन आपण देखि पड़थबे स्क्रीन रे, सी नंबर ऑप्शन हमरो ଦେଇଛି half E1 I1 cos theta 1 E3 I3 cos theta 3, D ଦେଇଛି half E1 I1 cos theta 1 plus E3 I1 cos phi 1. वीडियो बहुत लेंथी हो जाउची, सेतपई एतिकिरु हमें एकुटा रखिदबा. या परे पुणी काली मु या एक्स्ट्रा पार्ट जोटा मु नेकी आसीबी. प्रथमे एई जो 31 टी क्वेश्चन मु आपनको डिस्कस कली, 31 टा क्वेश्चन सेटा आपण माने करिकी टेलीग्राम ग्रुप रे आपण पठांतु. मु लिंक दे दोची डिस्क्रिप्शन रे. बहुत बेनिफिशियरी रहइबो. एटा 2015 या पूर्वरु परीक्षा हेई नथिला. 2015 रो जो बाहरी थिला एडबली ताहार क्वेश्चन पुणी एथर हबो. तार रिजेक्ट लिस्ट भी आसी जाईची, तो बहुत जल्दी एग्जाम होबार चांसेस, गोटे मंथ भीतर एग्जाम हेई जिवो. प्रैक्टिस करंतु, जेते पारुचंते सेते निजे करंतु प्रथमे, तापर हम आंसर की प्रोवाइड करबा. काली पुणी मु 31 पाखरे रखिली, 32 टू काली पुणी हमें डिस्कशन करबा. ऑल द बेस्ट. ट्राई करंतु, एग्जाम जेमती दउचंते सेमिति भाबिकी ही चेष्टा करंतु. छाडी दियंतुनी, करंतु. जोटी न आसुची कमेंट करंतु, नचेत टेलीग्राम ग्रुप रे जेतिकी होउची करिकी आंसर की सहित पठांतु, हमें चेक करिदेबु. थैंक यू. पुणी काली मु यार नेक्स्ट पार्ट नहीं कि आसबि. जय जगन्नाथ.